हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। मैं मिस इंजाय स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में जस्ट बायोलॉजी। आज का हमारा लास्ट पोर्शन चलने वाला है चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड से। चलिए बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम इज द कलेक्शन ऑफ ड्राई प्लांट। ड्राई प्लांट कौन से? यहाँ देखिए नेम से ही मेन साफ साफ हमें पता चल जाता है। नेम इज इंडिकेटेड ओनली वी टॉकिंग अबाउट द हर्ब्स। ओके, so herbarium is the storehouse of herb plants specially, and these plants are the dried plant, not the fresh plant or wetted plant. Specimens that are stored, catalogs and arrangements of families, genus and species for study. Okay, only preserved plants. यहाँ पर plants को preserve किया जाता है, not the conserve. Preserve means organisms are dead and we store dead organisms. This is the preservation. Next, this is the herbarium sheets. This is the dry plants. Yeah, herb. This is the plant flower, and this is the leaf, and this is the stem portion of it. And here is the some information written down at the corner of sheet. Second, museum. Museum for large size plants. म्यूजियम में भी हम प्रिजर्व ही कर रहे हैं इनको, लार्ज साइज प्लांट्स को। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बड़ा पेड़ या कोई एनिमल लाइक डायनासोर्स। अ म्यूजियम इज नॉट फॉर प्रॉफिट। म्यूजियम कभी प्रॉफिट के लिए नहीं होते, परमानेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं इन द सर्विस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की सर्विस करते हैं। सच इज कलेक्ट्स, कंजर्व, इंटरप्रेट एंड एक्सिबिट टेंगिबल एंड इंटेंगिबल हेरिटेज। ओपन टू द पब्लिक, accessible and inclusive museum, foster diversity and sustainability. This is the museum, and these are the college students who are visit to the museum. This is the. Can you tell me this? Can tell me the name of this specimen? Next is the botanical garden. Botanical garden, also called the botanic garden. Okay, so somehow if in the paper, botanical garden also written as botanic garden. Originally a collection of living plants, chiefly to illustrate interrelationship within the plant group. This is the botanical garden, and here is the we conserve the living organisms, not the dry organisms. Conservation is the protection of living organisms, and preservation is the protection of dead organisms. Next, taxonomical keys. Taxonomical keys, it is a method to use to identify a specimen by answering a series of questions, contrasting features that have two possible outcomes. Like examples, this is the key. Somehow we collect any insect, so हम insect के classification के को follow करते हैं insects. If having a large wing, so maybe the butterfly, or if not small wing, so this is wings, bear, rear legs, वेरी लॉन्ग लेग्स और शॉर्ट लेग्स। लॉन्ग लेग्स हो गए तो मस्कीटो हो सकता है, ग्रास ऊपर हो सकता है, लेकिन अगर लेग्स शॉर्ट है तो राइनो बीटल्स हो सकती है, या नॉर्मल हॉर्न हेड है तो स्मॉल आइज और लार्ज आइज के अकॉर्डिंग। स्मॉल आइज है तो टर्माइट हो सकता है और लार्ज आइज तो बीटल हो सकता है। ओके, सो दिस इज द टैक्सोनॉमी, एंड विच स्टेटमेंट वी फॉलो या एक्सेप्टेड, इट इज द लीड एंड अदर इज rejected, and both the group of statements is called as couplet. These are the some notes available for this portion. Taxonomical aids. Herbarium, this is the sheets, and herbarium sheet carry the reproductive and vegetative part of the plant. Reproductive part is the flower and vegetative part is the leaf. And here is the some information which are required to written down. Herbarium sheet is the fixed dimension only for the plants, not for the animals. Some special or some small size plants are only preserved, and only dried plants are preserved. Herbarium only for the plant which help in research and taxonomy. We already
It is the largest aquarium is the रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यूई लंदन. बोटेनिकल गार्डन के बारे में बात करते हैं. फॉर प्लांट कंजर्वेशन, नेम प्लांट विद साइंटिफिक नेम्स, कॉमन नेम एंड फैमिली. आपने देखा होगा कि कॉलेजेस वगैरह में भी एक स्पेशल एरिया होता है जहाँ पर सॉरी एक एरिया होता है जहाँ पर प्लांट्स को रखा जाता है और वहाँ पर उन प्लांट्स के लिए एक नेम प्लेट लगा दी जाती है. उस नेम प्लेट पर साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम एंड बोटेनिक फैमिली वगैरह लिखी होती है उस प्लांट की. इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता, लॉर्ड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग, नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ. ये आपको याद करना है कि कौन से कहाँ पर है, ये पूछे जाते हैं. म्यूजियम फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बोथ स्मॉल एंड लार्ज साइज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. बोथ प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी सॉफ्ट बॉडी होगी तो हम उसको फॉर्मेलिन में डिजोल्व करके रख सकते हैं. फॉर्मेलिन में ही क्यों? फॉर्मेलिन में इसलिए कि यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म डिके नहीं होता, सड़ता गलता नहीं है, फॉर्मेलिन में प्रिजर्व रहता है. एंड अगर बॉडी हार्ड है, बड़ी है, तो उसको हम स्टफ कर देते हैं. मीन्स उसमें से सभी टिश्यूज़ वगैरह रिमूव करने के बाद में उसका जो स्केलेटन है उसको हम स्टफ कर दें विद दी डस्ट ऑफ वुड एंड कॉटन, anything. Zoological park is the ex-situ conservation like zoos. Ex-situ means which we protect any animals outside their original habitat या natural habitat, and in-situ conservation we protect organisms in their natural habitat. So taxonomical keys ये एनालिटिक डिवाइसेस होते हैं जिसको हम देख करके पता लगाते हैं. एंड इट इज द प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द बेस ऑफ identification and statement based, which pair of statement is called as couplet. So this is the example. Selected statement called leads. And what is flora? Flora is कहते हैं हम plants को. Manuals is the picture based book like your album. Monograph only study of one group, detailed study of one group in a book. And catalog is the alphabetically arranged all information. So thank you so much. I hope you understand it.